हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो हमने जो पिछली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स का पढ़ रहे थे, उसमें एक हमारा तीसरा नंबर छूटा हुआ था, जो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में वो जो पोर्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस और यूएसबी पोर्ट, तो आज हम इसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो कर लें, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़कर आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल, यहाँ एक छूट गया है गाइस, आप लोग लिख लीजिएगा। सीरियल बस USB port is a standard interface used to connect various types of repair device such as mic, keyboards, printers, scanners, camera and cameras and external storage, device to a computer USB is a serial communication protocol meaning that
data is transmitted over a single wire or channel 1 bit at a time. चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन हम समझते हैं। एक यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिसका यूज हम लोग विभिन्न प्रकार के पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर्स हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर को हम लोग जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है। यूएसबी जो है वो एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ होता है कि डेटा एक समय में एक वायर या चैनल पर प्रसारित करें। या ठीक है। चलिए इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। देयर आर सर्वर types of USB ports including USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0 each new version of USB offers faster data transfer rates and other improvements USB 3.0 for example has a maximum data
मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ 5 गीगाबाइट्स पर सेकेंड GBps गीगाबाइट पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होगा वाई USB 4.0 can reach up to 40 Gbps। चलिए इसके हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। USB 1.1, USB 2.0 और 3.0, USB 4.0 सहित कई प्रकार के पोर्ट होते हैं। ठीक है, USB का प्रत्येक नया वर्जन जो होता है, न्यू वर्जन, वो तेज डेटा को अंतर दर या अन्य सुधार प्रदान करता है। मतलब जैसे जैसे USB का न्यू वर्जन आता है, उसमें जो उसका काम जो रहता है डेटा को ट्रांसफ़र करने का, वो उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ सुधार भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ लिखे हुए 3.0 की अधिकतम डेटा अंतरण जो है वो 5 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड है, और जबकि जो 4.0 जो है Gbps तक ये पहुंच सकता है। ठीक है, तो मतलब 3.0 से ज़्यादा बेस्ट 4.0 है। ठीक है, चलिए अब जो 1.1, 2.0, 3.0 USB है, इस सब के बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं इस वीडियो में। पहला हम समझेंगे, पहला पॉइंट USB 1.0, 2.0 and 3.0। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। देयर आर द versions of USB and every later versions of the USB simply supports a better data transfer rate चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। ये जो USB वर्जन है, USB का हर बाद वाला वर्जन बेहतर डेटा का अंतरण दर का ये समर्थन करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है। जैसे जैसे आगे, जैसे
02.0 3.0 जैसे जैसे इसका वर्जन आगे बढ़ता है ये बेहतर डेटा को ट्रांसफ़र करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका USB 3.1 3.2। चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्टिल USB 3 but offers faster data transfer and also capable of handling more power of fast चार्जिंग। चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। USB 3.1 एंड 3.2 अभी भी ये USB 3 जो है इसका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो बहुत तेज़ी से चार्ज करने के लिए अधिक पावर को ये संभालने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। टाइप और USB। चलिए USB के टाइप के बारे में जानते हैं। ए टाइप जो USB है वो A है, टाइप A USB के बारे में जानेंगे। द कॉमन जो USB connector that you see everywhere जो टाइप A USB है वो सामान्य जो USB कनेक्टर जो आप हर जगह देखते हैं, इस जितना भी USB इसका हम शॉर्ट्स में फ़ोटो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है टाइप B USB। ठीक है, A USB के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए अब B USB के बारे में भी जान लेते हैं। The square type connector that is
commonly used for printers चलिए इसके बारे में हिंदी जानते हैं। जो BUSB है वो स्क्वायर होता है, उसका जो टाइप है वो स्क्वायर टाइप का होता है, और कनेक्टर जो ये नॉर्मली आमतौर पर प्रिंटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट देखते हैं। मिनी एंड माइक्रो टाइप BUSB मतलब मिनी एंड माइक्रो टाइप BUSB के बारे में जानते हैं। यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइस such as smartphones, tablet, tablets and digital camera। चलिए इसका हिंदी जानते हैं। जो मिनी एंड माइक्रो टाइप BUSB है उसका यूज़ हम लोग स्मार्टफोन, टैबलेट और डिजिटल कैमरा जैसे मोबाइल डिवाइस के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए टाइप C जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। 6 पॉइंट टाइप C ये अभी बहुत चलन में है। टाइप C जो USB है केवल यह हर एक स्मार्टफोन में अवेलेबल है। टाइप C ऐसे लिख दिए थे। ऑल्सो यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइस but this one is reversible there is no direction and you can plug this in upright or
रिवर्स्ड। चलिए इसका हिंदी जानते हैं। चलिए इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। सी टाइप्स जो है ये मोबाइल डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है, और लेकिन इसमें दोनों तरफ कनेक्टर होता है, अर्थात कोई दिशा नहीं है और आप इसे सीधा या उल्टा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग बी टाइप का यूएसबी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस मोबाइल में सी टाइप का होता है उसमें सी टाइप ही रहेगा, और जिसमें बी टाइप का होता है उसमें सिर्फ बी टाइप का ही यूएसबी। लेकिन इसमें ये प्रॉफिट है कि सी टाइप में हम उल्टा सीधा दोनों तरफ लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी टाइप में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यूएसबी के बारे में हर पॉइंट समझे अच्छे से, डिटेल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हुआ होगा, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।